So I'm live and time to start today's session. So waiting for the people to join in and then we'll start. So good evening, Mohit sir. I'm good, thank you. And how are you? Sorry. Good evening, Bhanu sir. How are you? Am I audible? Can you hear me properly? Good evening, Kabira ma'am. I'm good, thank you. And how are you? I'm also good, Bhanu sir. Thank you. Day was productive. Okay, sounds good. Just I got. Good evening, Pooja ma'am. How are you? Good evening, Priya ma'am. I'm good, thank you. And how are you? I'm also good, Pooja ma'am. Thank you. So it's 10 o'clock and time to start today's session. And as I think you must have seen, good evening, Simi ma'am. How are you? Good evening, Yashi ma'am. How are you? Well, so I was talking about today's session, and there are five amazing phrases today. We're going to talk about. I'm good, thank you. Hope you're also good. Thank you. So I was talking about five amazing phrases. So good evening, Sudhir sir. The first one talk about acha. They are beautiful. Like starting with the be all heart. Fine. So बी ऑल हार्ट. बी को आप जब चेंज करेंगे. गुड इवनिंग सानिध्य सर. आई एम गुड, थैंक यू. एंड हाउ आर यू? एंड प्लीज नाउ इट्स टाइम फॉर द कंसंट्रेशन. सो आज कुछ नए वर्ड्स हैं, कुछ नए फ्रेजेस हैं. सो वी टॉकिंग अबाउट दैट. सो बी ऑल हार्ट. एंड हियर वी टॉकिंग अबाउट, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जब आप बी को देखते हैं तो बी के साथ में आपको एटलीस्ट दो तीन चीज़ें अच्छी तरह क्लियर कर लेनी चाहिए. दैट बी को जब आप प्रेजेंट में यूज करते हैं तो यूजुअली वी यूज इज एम आर. ठीक है. सो आई एम ऑल हार्ट जब आप इसको प्रेजेंट सेंटेंस में बनाएंगे. ठीक है. और अगर आप इसका पास्ट टेंस बनाएंगे तो बन जाएगा आई वॉज ऑल हार्ट या शी वॉज ऑल हार्ट. फाइन. एंड अगर आप प्रेजेंट यूज कर रहे हैं उनके थर्ड पर्सन के लिए तो शी इज ऑल हार्ट. मैं किसी के साथ भी आप यूज कर सकते हैं. और जब आप इसे फ्यूचर में ले जाएंगे तो आई विल बी, अगर आप इसका पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो एज सिंपल एज दैट, दैट आई विल बी ऑल हार्ट. फाइन. इसके एक्चुअली अगर आप ग्रामर में मीनिंग ढूंढेंगे तो इट हैज टू मीनिंग. अगर साउंड्स लाइक, जैसे मैंने भी इसको जब पहली बार सुना, सो द फर्स्ट थिंग केम एंड इट इज लाइक आई एम ऑल हार्ट. इसका मतलब है कि अ पर्सन हु इज वेरी काइंड एंड जेनरस. मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा दयालु होता है, उस जगह पे आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं किसी इंसान के लिए. बट इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग ऑल्सो. स्पेशली कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसके बारे में जो है वो दैट इज कि इसका एक जो सेंस है वो है ह्यूमरसली, मतलब मजाक करने के लिए, किसी की टांग खिंचाई करने के लिए भी आप बोल सकते हैं. यूजुअली वहाँ पे ये इसका पॉजिटिव सेंस नहीं निकल के आता.
सो अगर आप किसी थर्ड पर्सन के लिए कह रहे हैं कि शी इज़ ऑल हार्ट, मीन्स लाइक मान लेते हैं आप अपने सिबलिंग से कुछ पैसे मांगे और कहें कि यार मुझे 100 रुपये उधार दे दो या 100 रुपये दे दो, एंड वो आपको उठा के 10 रुपये का नोट दे दे और आप कहें वाह यू आर ऑल हार्ट। तो आप इस एग्जाम्पल को समझिएगा कि यहाँ पे जब मैंने कहा यू आर ऑल हार्ट, सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वाह कितने दयालु हो आप, समझ रहे। सो आई वॉन्ट टू शो यू दैट यू आर वेरी जेनरस, यू आर वेरी काइंड। मतलब 100 की जगह आपने मुझे 10 रुपये दे दिए, इन द सेंस एक तरह से मैंने मजाक में ये चीज़ कहा है, क्लियर। सो द थिंग इज दैट, सो इसका इस सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर। सो यू कैन यूज इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, आपको वो सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी इसको यूज़ करने के लिए। इसको ऐसे ही आप हर जगह मत यूज़ कर लीजिएगा ना। समटाइम्स जो मैं कहना चाह रहा हूँ दैट इज इसका बेसिक यूज़ है जब आप ह्यूमरसली इस वर्ड को यूज़ करते हैं, इस फ्रेज को यूज़ करते हैं। सो इसको सेंटेंस जब आप बनाएं, अब नाउ इट्स योर टाइम टू मेक द सेंटेंस। तो आपको वेरी सिंपल टू डू। प्रेजेंट में अगर आप बना रहे हैं तो आप बना सकते हो। गुड इवनिंग दिव्यांशी मैम। सो आई विल बी ऑल हार्ट। Future. Our school used to give us only 5-star chocolate on Children's Day. They were all heart. Good use, Bhanu sir. My ex honor is all heart. Okay. And I think Simi ma'am, you shouldn't use my ex honor. वो आपको ओन नहीं करते ना, तो ऑनर तो नहीं है वो आपके। आप उन्हें कह सकते हैं माई एक्स बॉस, है ना, या माई एक्स एम्प्लॉयर। ओनर ना यूज करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लैंडलॉर्ड यूज कर सकते हैं, फाइन। सो ओनर के लिए आई थिंक यू शुडंट यूज दिस। So what about other guys? He was all heart. You're right, मीन्स आपके जो sentences हैं are correct, बट जैसे भानु सर ने एक डिटेल के साथ उसको ऐड किया, सो जो एक्सप्लेनेशन है इट हैज़ मोर मीनिंग, सो वो बहुत मीनिंगफुल हो गया। माई लैंडलॉर्ड इज ऑल हार्ट। यस, जब आप उन्हें बोल सकते हैं कि you are all heart that you gave me 10 rupees. I won't forget. Sometimes my cousins are all heart. रक्षाबंधन पे आप में से बहुत सारे फीमेल्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि रक्षाबंधन में आपके कज़न जो हैं, ही कज़न्स जो हैं, या आपके जो रियल ब्रदर हैं, अगर वो ये कहें, मतलब आपको राखी के बदले देयर आर सो मेनी फीमेल्स दे एक्सपेक्ट अ लॉट। सो उस सेंस में आप अगर उन्हें सिर्फ एक 10 रुपये की कैडबरी चॉकलेट ला के दे दें और कहें कि दिस इज़ योर रक्षाबंधन गिफ्ट, तो वो आपकी तरफ देख के ही बोलेंगी ब्रदर यू आर ऑल हार्ट। See, I am such an all heart. She asked for pizza, but I gave her sugarcane juice. My parents are, no, it's our. So could you please explain? I have already explained Divyanshi ma'am. This is now. You have to like see this because I've explained and no time for it. So you should be ready for the next phrase, and that is be all ears. Clear? This is the second one. Be all ears.
It means that you are eagerly waiting for, means waiting to hear something very इंटरेस्टिंग, या कुछ भी सुनने के लिए आप बेसब्री से किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, उस सेंस में आप अपने लिए बोल सकते हैं आई एम ऑल ईयर्स। ठीक है, सो आई एम ऑल ईयर्स फॉर द गुड न्यूज। आप उन लोगों के लिए बोल सकते हैं जिन लोगों की लाइफ में कुछ आपको पता है कि कुछ होने वाला है, मीन्स काइंड ऑफ, स्पेशली इन इंडिया, when a lady is or maybe I think boys and girls की बात होगी, when they are married, so marriage के कुछ months के बाद ही you know लोग बोलना शुरू कर देते हैं, तो कब गुड न्यूज सुना रहे हो, I'm all ears, so I'm all ears in your sessions, so you're always waiting eagerly to hear something, eh? Very, that's very nice, Bhanu sir. I'm all ears for result. Is this right? Yes, of course. If you're eagerly waiting for something, something, I'm all ears for my result. You can say this, and रिजल्ट के लिए आप बिल्कुल बोल सकते हैं I'm all ears. और अगर आप कभी बातचीत करते वक्त और कहें कि that day what happened, सो अगर किसी से आपकी बातचीत चल रही है, आपको कोई कह रहा है कि पता है यार उस दिन क्या हुआ था, आपने कहा या कई लोग तो सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं व्हाट हैपेंड, है ना, और कई लोग इसकी जगह आप ऐसा भी बोल सकते हो आई एम ऑल ईयर्स व्हाट हैपेंड दैट डे। सो आई एम ऑल ईयर्स व्हाट हैपेंड का मतलब ये है कि मैं वेटिंग टू हियर, माय फ्रेंड इज प्रेग्नेंट एंड शी इज ऑल ईयर्स, शी इज ऑल ईयर्स। ओके, it means he's waiting eagerly to know, to hear about something. She was all ears for the program, but it got postponed. हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, आई एम ऑल ears to hear good news. So you guys are getting it. So waiting for more people to participate. You are all heart, sir. Means it's somewhat commentive, Pooja ma'am. So I'm all ears for the prize distribution, students' names. I'm all ears for my exams. So you are eagerly waiting to hear about your exams, Priya ma'am. I'm all ears for holidays. Okay, so she's all ears to know her dance competition's result. Good. I'm all ears for my new home. So I have heard speakers saying, I want all your ears. Is that I want all your ears? Your ears? You होना चाहिए होगा. I think I want you all ears. I want you all ears. So I want you all ears. So I makes sense. But when my exams will be finished, be use hoga Priya ma'am, that is passive voice. So when my exams will be finished, I'm all ears to shift my new home. I'm all ears to shift नहीं, यहाँ पे नहीं है. अब I'm all ears about shifting my new home. By this they mean listen to them carefully. I got it. So that is the main thing, ना, कि आप इसको जो सेंस में यूज कर रहे हैं, so you are eagerly waiting, it means that your your speaker
wants you to be eager about the stuff what you are speaking. We are all ears, इसमें all लगाना जरूरी है. We are all ears to know the exam dates. All ears about the exam dates. Okay, so fine. So this was the second phrase of the day. Now all means be all eyes. Be all eyes मतलब आई एम ऑल eyes. पहले ईयर्स की बात हो गई पहले, और अब आइज की बात हो रही है. इसका मतलब है it means that you are watching something, and maybe I think somebody with a lot of interest. So जब किसी चीज को बहुत इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं, इट मे बी अ पर्सन और इट मे बी अ थिंग, सो इसको कहते हैं बी ऑल आईज. सो आर यू ऑल आईज, ये उस समय बोल सकते हैं. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मैं आपको किसी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस पे ले गया, मैंने आई जस्ट वांट यू टू शो समथिंग लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द ताजमहल, और आप ताजमहल गए हैं और वहां पे जाकर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आर यू ऑल आईज. इसका मतलब है आर यू वॉचिंग द ताजमहल with a lot of interest. I'm all eyes while listening your lectures. While listening हो सकता है ना. I'm all eyes for this kurti. Your love for kurti. But I'm all eyes while watching the movie. Yeah. I was all eyes when I saw a swanky bridal lehenga. Okay. Nowadays, those, among you who's got my, mobile number, you must have noticed one thing, that daily I post, in the morning, because daily I go for a walk, and there I click a pic. Daily I click a pic, and somewhere, when I see those things, so I'm all eyes when I look at something. So I just want to give you a very practical example like this. So in that time, it depends. Like some people of like I just see that it's a matter of liking, that when you look at the clothes, you are all eyes, and when I look at the nature, I'm all eyes. I used to be fond of cars, so I would say that I used to be all eyes while looking at swanky cars. I'm all eyes for learning my son. No, Pooja ma'am. So I'm all eyes when I watch your stories. Okay. Yeah, this is very good. Means if you like somebody's life and the way they live, and so we watch their status, especially I've seen so many guys, they watch reels, and every time when their mobile phones are on, they are always watching reels, and they watch it with a lot of interest, so especially food. Okay. I'm all eyes when I watch sunrise and sunset. Yes. uh, Depends. I'm all eyes for पचमढ़ी. No, 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 no. पचमढ़ी को कैसे देखोगे आप, है ना याशी मैम. किसी जगह के लिए आप नहीं यूज करोगे किसी. I'm all eyes when sun is rising.
एंड वैसे तो अभी इस फ्रेज को हम यहाँ पे ऐसे यूज कर रहे हैं, बट अगर आप मेरे साथ पर्सनली भी बैठे होते तो इसमें से मैं बहुत सारे आपसे क्रॉस क्वेश्चंस कर रहा होता, मैं पूछ रहा होता फिर आपसे कि व्हेन सन इज राइजिंग, how many colors do you notice, and when you look at something, like Kabira ma'am is saying that greenery, rivers and sea. So when you're all eyes, how many colors do you see when you see greenery around you, rivers around you, and even like when you look at any flower. So I'm all eyes for bikes. So am I Kabira ma'am? I'm. So you have to be more specific, especially like uh, there is nothing wrong with that. Like if you're interested in buying clothes and shopping, especially jewelry, if you like jewelry, and when you go to any shop and you look at any jewelry, so you can say when you look at any jewelry and you watch it very with a lot of interest, so you can say I'm always when I see new dishes for cooking, for cooking हो जाएगा. So there you can use this one also. Now the next one, be the first we have done the ears, we have done now be all mouth. ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस वाला है, ठीक है. आई सेकंड ऑफ यू नहीं है, आई सेकंड यू. यश मैम, I'm all eyes for beautiful flowers. Whenever we go on picnic, we are all eyes to watch the environment around me. We या I, क्योंकि अगर वी से आप बात कर रहे हैं तो अराउंड अस हो जाना चाहिए, फिर मी नहीं होना चाहिए. सुधीर सर ना. सो देयर वी गो. बी ऑल माउथ, इट मीन्स बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसे ऐसे बोलना और करना कुछ भी नहीं. मीन्स बोलना बहुत कुछ बट करना कुछ नहीं. जैसे आपने कहा कि आने दो पापा को, आज देखो मैं पापा को सब कुछ बता दूंगा, और मैं इसके मतलब ये व्यक्ति कह रहा है कि लुक, लेट पापा कम, देन मैंने कहा ओके आई नो यू आर ऑल माउथ. तो अगर मैं ये कह रहा हूँ यू आर ऑल माउथ, इसका मतलब है आप सिर्फ बोलते हो, करते कुछ नहीं हो. सर आई थिंक टुडे सेशन इज डेडिकेटेड टू ह्यूमन बायोलॉजी. I got it. So I thought it's a very interesting phrases, and very interesting, So they like this one, and you can use, and this is for the advanced people. Like if you really want to use in a very good environment where people know good English, and they want some interesting phrases in your language. So these are beautiful phrases, I guess. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस तरह की लैंग्वेज कौन बोलता है. इस तरह की लैंग्वेज आप अगर इंग्लिश के रेगुलर नॉवेल्स पढ़ते हैं, वेब सीरीज देखते हैं इंग्लिश में ही, ना कि हिंदी में, है ना. अगर आप उसका ट्रांसलेशन वाला पार्ट देखते हैं, अगर आप उसे डब देखते हैं, तो फिर तो आई थिंक यू रियली मिस आउट द एसेंस ऑफ दैट सीरीज एक्चुअली. आप इंग्लिश म्यूजिक सुने, इंग्लिश, तो आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड्स जो हैं बहुत बहुत यूज होते हैं. My boss is all mouth when we asked to salary increased. देखो आप सिमी मैम, आप आपने आस्क्ड लगाया, सेकंड फॉर्म यूज किया, तो फिर आपको जो फर्स्ट वाला है वो भी आपको वॉज लगाना पड़ेगा कि माई बॉस वॉज ऑल माउथ व्हेन वी आस्क्ड टू सैलरी, और टू नहीं आएगा. व्हेन वी आस्क्ड फॉर सैलरी इंक्रीमेंट, ही इज सच एन ऑल माउथ. इसमें एन नहीं यूज करना. He said he would be, you can use, okay, sorry, he's such an all mouth. He said he would be busy all day, but he spent
but he spent all day watching TV. But friends are all mouth. My boss is all mouth when we ask for salary increment. आप किसी को वैसे भी उसको डोंट बी ऑल माउथ. डोंट बी ऑल माउथ मीन्स सिर्फ बोलते रहते हो, करते कुछ नहीं हो. इतनी बड़ी लाइन ना बोल के आप इंग्लिश में मतलब सॉरी हिंदी में आप इतनी बड़ी लाइन का ट्रांसलेशन ना करके आपने सिंपल बोला डोंट बी all mouth. I know you inside out. You are always, you are always all. You are always all mouth means sometimes my mom says that I'm all mouth. Your mom knows you very well. That's why she says. And the last one of my friends is all mouth. The all fingers. My spouse is Pooja ma'am. My spouse is all mouth when I ask for new dress. I want to meet your husband, Pooja ma'am. I will give him very good, pieces of advice. One of my acquaintances is all mouth. Most of the politicians are all mouth. One of my acquaintances is all mouth. Okay, and this one, there are two ways. इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो. इसमें पहला है बी ऑल फिंगर्स एंड थम्स. इसमें फिंगर्स एंड थम्स दोनों वर्ड यूज होंगे और जो दूसरा वाला है वो है बी ऑल थम्स. इसमें फिंगर्स वर्ड अगर आप हटा देंगे तो भी दोनों का मीनिंग एकदम सेम निकल के आएगा. तो बी ऑल फिंगर्स एंड थम्स या फिर बी ऑल थम्स का मतलब है एक्चुअली आप यू नो कुछ भी ऐसा काम करते हैं स्पेशली हाथ से जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है. जैसे फॉर एन एग्जांपल जब आप बर्तन धोएं तो आपसे बहुत बर्तन गिरते हैं, आप आवाज़ बहुत करते हो, आपके हाथों से टूट-फूट बहुत होती है. मतलब आपसे कोई कहे कि आपको ये रखना है, तो पता चला आप उसे गिरा देते हो. मीन्स योर हैंड्स मूव इन वेरी ऑकवर्ड वेज़. सो लाइक दिस. इसको कहते हैं बी ऑल थम्स. So you can use that way. It's again, and it's not a positive phrase. तो अगर आप किसी को ये कहेंगे कि डोंट बी ऑल थम्स तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं या फिर आप उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं काम ना करने के लिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक से नहीं कर रहे हैं ना. तो डोंट बी ऑल थम्स इट मीन्स so waiting for your answers. Sometimes I'm all thumbs. हाँ, अगर आपसे कोई कोई आप में से कई लोगों को आस-पास वाले लोग कहते भी होंगे कि तो कुछ काम ही नहीं है तुम्हारे तो हाथ में. पर्सन डोंट बी ऑल माउथ. नो, अ पर्सन शुडंट बी यूज़ करना चाहिए. याशी मैम, अ पर्सन शुडंट बी ऑल माउथ. आई एम ऑल थम्स व्हाइल ड्राइंग. One of our friends is all thumbs. Are you all thumbs?
You shouldn't be all thumbs. Hmm. I'm all thumbs while cooking. You can use this. It means my sister-in-law is all thumbs. We hen she when okay when she washes utensils. So my sister in law is all thumbs when she washes utensils. No, I'm not all thumbs, but sometimes I can't help it. Yeah, he is all thumbs and acts हो जाएगा, acts as a barrel of laughs for us. Ah, a good use, barrel of laughs. Is a fun, it's a beautiful phrase when you use it for a person that he is a barrel of laughs. You shouldn't be. I said, Mohit sir, I read it, so it was right. You shouldn't be all thumbs. I'm all thumbs when I make malai kofta. Okay, you can use it in the while watching, especially cricket matches. If you see some फील्डर्स जब उनकी जो फील्डिंग होती है दैट इज़ वेरी स्लोपी और उनके हाथ से कैचेस छूटते हैं या फिर वो ढंग से बॉल नहीं पकड़ पाते तो यू कैन यूज दिस गाय इज ऑल फिंगर्स एंड थम्स दिस गाय इज ऑल थम्स जिस भी आपके बारे में बात करना चाहे that's all for today's session. Thank you so much for being present. I hope you enjoyed. I tried my level best to bring some new phrases for you. And that's all for today. Thank you so much. Once again, have a good night and have a sound slumber. See you day after tomorrow. Thank you. Good night, everyone. Good night.